Hello and welcome to the YouTube channel of RankerBuzz. We are again here with another important judgment. So today we will discuss about a very important judgment which has been pronounced by the Honorable Bombay High Court. And before going into the particular judgment, we'll see that why we are required to study this particular judgment या इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है. So आज की जो जजमेंट है वो रिलेटेड है environmental protection से. Environmental protection. So today we will see that why environmental protection is important, and when it comes to protecting the environment, protecting environment and the technological advancement. So whenever we talk about technological advancement and protecting the environment, this is something opposite to each other. Whenever we try and do some kind of advancement, some technological advancement, some advancement in the life, then in many cases we are actually in some ways harming the environment. कहीं ना कहीं हम environment को harm करते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो है development projects होते हैं in the name of development. So in the name of development, always there is some harm to the environment, because whenever we some development project is on, then definitely we need to cut some trees, cut trees, or change the direction of river. So such things are very common when it comes to the developmental projects, और ये बहुत सारे projects में देखा गया. So अब क्या किया जाए, because development is also important, and protecting the environment is equally important when it comes to the survival of human beings. तो क्या जरूरी है, क्या हम environment को बचाएं या फिर हम जो है अपनी development पे ध्यान दें, environment पे इतना ध्यान ना दें, या फिर we need to have a balance between the two. Balance between environment and development. तो सबसे जो अच्छा अप्रोच है, द बेस्ट अप्रोच इज टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीज टू. दोनों चीजों में, एनवायरनमेंट और जो हमारा डेवलपमेंट है, इन दोनों में बैलेंस जरूरी है. That we also being a developing country, it is important that we must develop our things. जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम टाइम टू टाइम डेवलप करें. एंड ऑल्सो we must protect the environment, as we have a very large population, and environment is a big challenge. Changing environment is a big challenge for us, so we must take care of both the things at the same time and create a balance. So आज जो हम judgment पढ़ने वाले हैं, this is also related to this balance, that how this balance should be maintained, and what the court has said with respect to one of the developmental projects or ambitious projects of India. So let's come to this judgment. So firstly, what is the name of this particular judgment? So the name of this particular judgment is the National High Speed Rail Corporation Limited versus State of Maharashtra. 2022. So as we all know that National High Speed Rail Corporation Limited is building the the fastest train network of India, that is the bullet train. So it is developing the bullet train from Ahmedabad to Bombay. So it is the
bullet train project which is going on. And it is one of the most ambitious projects of our country in which a lot of investment has been given by the Japan. A lot of investment has been done by the Japan. तो यहाँ पे दिक्कत क्या है अब? So दिक्कत is that कि when this project is on, इस project को बनाने के लिए, you know, we need to cut a lot of mangrove forest trees. So we are required to cut so many trees, and this is the biggest issue which is there, जिसकी वजह से ये केस यहाँ पे लाया गया है. And it is said कि about 22,000 trees will be cut. Trees will be cut for this developmental project in the coastal belt. In the coastal areas, the forest areas, यहाँ पे कम से कम इतने पेड़ काटने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी. इसलिए बहुत सारे environmental एक्टिविस्ट और भी एंड इवन सम अथॉरिटीज फ्रॉम दी जो कि मैनेज करती हैं कोस्टल एरियाज को ऑफ दी महाराष्ट्र, they are against this particular project and they are against the cutting down of 22,000 mangrove forest trees. So let's see that what is the contention being given, क्या यहाँ पे contention दिया गया. So firstly, if we talk about this project, so as I have already told you, this is the highly ambitious project of bullet train in India, which has got international funding. International funding है इसको from the Japan International Corporation Agency, which has given the loan at 0.1% per annum. So it is a very low cost funding which has been given to India for the first time, such a big loan, and on such a less interest which has been given. And the loan is, this project is going to be about 1,10,000 crore. This is the approximate worth of this particular project. So it's a very big project and very ambitious project which need to be meet its deadline. And what is the benefit of having this? The benefit of having this is that it will reduce the time of transport, or we can say the time of travel timing जो है, it will reduce the travel timing for about 4 hours. करीब 4 घंटे का फर्क पड़ेगा after this project will be ready. When it comes to the commuting from the Bombay to Ahmedabad, it will take around 2.5 hours, while right now it takes around 6 to 6.5 hours. So it's a good project, and it will definitely reduce time and definitely increase the travel rate of people, and it will be easier for the people to travel from Gujarat to the Bombay and do their stuff, like there is a lot of business activities which go on between these two cities. अब यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं, जो ये जो अथॉरिटी है जो यहाँ पे परमिशन मांग रही है, उसका क्या कहना है यहाँ पे कि क्यों वो ये परमिशन चाहते हैं. ये सब चीज़ें तो ठीक है कि भाई उन्होंने बताया कि दीज आर दी बेनिफिट्स, कि भाई टाइम कम हो जाएगा, या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हमें किसी भी तरीके से पूरा करना है. अब इन्होंने बोला कि वी विल डू वन थिंग, कि भाई हम इसका जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करवाएंगे एंड देखेंगे कि इसका कितना असर होगा एनवायरनमेंट पे, और उसको हम किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं. पहली चीज इन्होंने ये कही, और इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, पूरा स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे. ऐसा नहीं कि हम भाई काट देंगे ट्री और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम. दूसरी चीज यहाँ पे इसका कहना था कि भाई जो फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पे जो आएगा रास्ते में, ये है करीब 131.3016 हेक्टेयर्स.
and we will cut about trees in about 13.3668 hectares. तो टोटल फॉरेस्ट लैंड था इतना, इसमें से मैनग्रोव जो है वो है करीब 32 हेक्टेयर्स इतना है, और इसमें से 13.3668 हेक्टेयर्स जो है यहाँ पे ट्रीज काटने होंगे। तो बहुत कहता है कि इट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ एरिया वी आर कवरिंग। साथ ही साथ कहता है दैट जितने हम काटेंगे 1:5 के रेशो में हम नई जगह पे पेड़ लगाएंगे भी नए। ठीक है, अगर वी कट डाउन one tree, then in lieu of that we will plant 5 more trees. So this is what they are promising. It is not कि भाई आज उन्होंने लगा दिए हैं, what this is what they are promising that they will do the same. Means if they are cutting down 20,000 trees, they will plant about 1 lakh trees in near future. तो ये तो इनका कहना था भी इस तरीके से हम जो है इस चीज को इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे। अब बात आती है कानून की कि भाई क्या जो रेलवेज एक्ट है, जो हमारा रेलवेज एक्ट है, रेलवेज एक्ट जो है, क्या वो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, क्या उनको ओवरराइड करता है? मींस कि रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए किसी भी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। दिस क्वेश्चन इज रेज्ड कि भाई वेदर रेलवे एक्ट ओवरराइड्स द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कि भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको रेलवेज एक्ट क्या ओवरराइड करता है? मींस के रेलवेज को जरूरत नहीं है उसकी क्लियरेंस की। तो इसके लिए कोर्ट यहाँ पे कुछ केसेस को रेफर करता है। इट रेफर्स सर्टेन केसेस लाइक वन केस इज गन्व भवांचो वर्सेस साउथ वेस्टर्न रेलवे, and one more case that is Goa Foundation versus Konkan Railway. So these are some of the cases which the court has referred, and the it said that clearance under Environmental Protection Act is not required. So clearance is not required if we consider these cases not required, even though a railway line passes over rivers, forest, etc. तो कहता है कि clearance is not required by by the railways. Railways are not required to take the clearance from the under the Environmental Protection Act के अंदर जरूरी नहीं है। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे सेक्शन 11 जो था दैट वाज इन डिस्प्यूट, सेक्शन 11 ऑफ द रेलवेज एक्ट, जिसके तहत कि भी क्या ऐसा रिक्वायर है या नहीं है, तो कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है। पर देन यहाँ पे कई और केसेस के कोर्ट ने यहाँ पे जिक्र किए, दैट इज नॉट नेसेसरी, ईच ऑफ दीज केसेस आर नॉट नेसेसरी टू बी नोन। सो अब कोर्ट ने देखा दैट आफ्टर कंसिडरिंग बोथ द साइड्स आर्गुमेंट, दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने देखा दैट व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। बिकॉज क्या होता है कि बेनिफिट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा कि किस चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा है, तो जिसका बेनिफिट ज़्यादा होगा डेफिनेटली दैट विल बी implemented. So considering the benefit, the project is likely to offer public at large by way of reduction of travel time together with reduction of carbon footprints. तो कहा भी कि यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करेगी, पब्लिक एट लार्ज विल बी बेनिफिटेड, कि भी पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट होने वाला है। सो वी कैन
वी कैन परमिट दिस थिंग कि भी बहुत लोगों को इससे फायदा होने वाला है, एंड इन्वायरमेंट को एज सच कोई लॉस पहुंचाने की इंटेंशन यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। जस्ट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पब्लिक, दिस प्रोजेक्ट इज बिन एग्जीक्यूटेड, इस वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिर कहता है भी कि जो कुछ फैक्टर्स पुराने थे, पुराने कुछ केसेस या पुराने कुछ ऐसी चीजें जिसपे कि कोर्ट ने यहाँ पे रिलाई किया या फिर एग्जाम्पल के तौर पे बताया, कहा कि भी जैसे कि द थाने स्टेशन बिल्डिंग हैज ऑलरेडी बीन शिफ्टेड आउट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द विरार स्टेशन हैज आल्सो बीन शिफ्टेड आउट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, कि भाई कुछ स्टेशंस थे उनको पहले ही उन जगह से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसा पहले भी हो चुका है। कहता है साथ ही कि दैट state that a comprehensive mangrove conservation management plan has already been put in place। कहता है भी ऑलरेडी जो मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो ऑलरेडी प्लेस में है। मैंग्रोव प्रोटेक्शन, तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, एंड उसके लिए काम भी चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा कि भी दे आर रेडी टू प्लांट अबाउट मोर देन 1 लाख ट्रीज। जब वो 22,000 यहाँ पे काट रहे हैं तो दे आर रेडी टू प्लांट more than 1 lakh trees. So we don't think that it's a very big problem. So considering the advantages, यहाँ पे advantages को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने जो है यहाँ पे रेलवेज के फेवर में ये डिसीजन दिया। डिसीजन इन दी फेवर ऑफ रेलवेज, रेलवेज के फेवर में दिया कि यस यू कैन गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस फ्रॉम द अथॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि भाई आप अगर चाहें तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द बेनिफिट्स इसके ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द लॉसेस, एंड लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए यू ऑलरेडी हैव अ प्लान। आप पहले ही कह चुके हैं कि भाई आप इतने ट्रीज लगाने वाले, तो वी डोंट थिंक कि भाई इससे बहुत ज़्यादा लॉस के कोई चांसेस हैं या फिर हो सकते हैं। तो इसी वजह से कोर्ट ने यहाँ पे इनके फेवर में डिसीजन दिया, और दिस केस वॉज बेसिकली डिसाइडेड बाय जस्टिस दत्ता, जस्टिस दत्ता एंड अभय आहूजा, एंड दे अलाउड दिस पर्टिकुलर पिटिशन। यहाँ पे पिटिशन को अलाउ किया गया और कहा गया द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली कवर द डिस्टेंस ऑफ 508 किलोमीटर्स, कहता है दैट इट विल नॉट ओनली कवर द डिस्टेंस ऑफ 508 kilometers within period of 2.5 hours, you know 2.5 hours instead of प्रेजेंटली 6.5 hours। अब जो प्रेजेंट में 6.5 घंटे हैं अब 2.5 घंटे लगा करेंगे, तो ये जो है दोनों ही सिटीज़ के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, एंड इट विल इंक्रीज द कनेक्टिविटी बिटवीन द अहमदाबाद एंड द मुंबई विच विल इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ द स्टेट्स। कहता है कि यहाँ पे इट विल इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ द स्टेट्स, दोनों ही स्टेट्स की जो है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ाने का काम यहाँ पे करेगा, एंड इट विल ऑल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी यंगस्टर्स इन बोथ द सिटीज। कहता है कि ये एक एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा जरिया बनेगा लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं। जिस टाइम भी इसका मान लीजिए कि जब ये बन रहा है या आगे चल के मेंटेनेंस होगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी एम्प्लॉयज विच आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन दीज प्रोजेक्ट्स, तो डेफिनेटली इट विल बी अ very good opportunity for the people living in these areas. So that is why the clearance was given, और यहाँ पे allow किया गया that the project can be the project should be go ahead और इसको complete किया जाए। So we can what we can take out of this judgment is that we must look at these things in a balanced way. you know there should be a balance between development and
environment protection, and we must see the benefit of this, that whether it is going to benefit a large number of people, that it is okay to cut some trees and give benefits to other, and after that we can also plant some trees in some other area so that we can compensate the same with दिस डेवलपमेंट के साथ साथ जो है हम एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन करें और डेवलपमेंट भी करें। लेकिन हाँ, एक जगह ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चीज़ें काटी जाए, तो वहाँ पे काट के दूसरी जगह हम लगा सकते हैं टू कंपनसेट। बट यस, एवरीबडी हैज़ इट्स ओन व्यू। अब इसका भी एक क्रिटिसिज्म है कि दिस हैज़ बीन प्रॉमिस्ड, बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। एंड व्हेन दिस मैनग्रोव्स आर कट, क्योंकि मैनग्रोव्स आर अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज विच आर फाउंड इन ओनली इन कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। अब इनको तो काट दिया गया, लेकिन जो अब जो ट्रीज लगाए जाएंगे वो किस वैरायटी के लगाए जाएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे, जो यहाँ पे जो चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी इनकी वजह से, अब फॉरेस्ट है, ट्रीज कटेंगे तो जो जानवर भी होंगे वो भी यहाँ पे इफेक्ट होंगे, सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी, तो ये कितना ज़्यादा कंपनसेट हो पाएगा, that is a debatable thing. But right now the court has decided in the favor of the railways that they can go ahead with this. Otherwise it is everybody have its own opinion with respect to the environment, because we know that environment protection is also a very hot topic these days because of the जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कंसिडर्ड कि भाई इन्वायरमेंट को हम कम से कम नुकसान यहाँ पे पहुंचाएं। तो आई होप you all have understood this particular judgment, in which the judgment has gone in the favor of railways for the bullet train, and it has been given the go ahead signal, ठीक है, to the bullet train project, that cut the trees and just go ahead with your प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी मिल चुकी है, जो थोड़ा सा क्लियरेंस बची हुई थी, और अब ये प्रोजेक्ट जो है वो maybe on the deadline it will be completed. So I hope you all have understood. Thank you so much. Thank you for joining. We'll come up with more such sessions in the coming days.